Hello, Namaskar, my dear friends. Welcome back to my channel History Made Easy by Yogesh Kumar. And as the slide itself saying, we are going to share the important notes and we are going to discuss about chapter number 2 of class 12. Basically, this chapter deals with a different time frame. In chapter number 1, we talked about Indus Valley civilization that was in a different time zone. Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, they are going to talk about the time zone from 6th century BCE to 6th century CE. This is the time period in which we are going to study about that particular chapter. And the name of the chapter is King, Farmers and Towns, chapter number 2, class 12, history. Now, in the very beginning, few concepts have been explained, and the first concept is of the Piyadasi. Now, Piyadasi, uh, it's not a Hindi word which you are able to understand. Piyadasi is a different word, is from a different language. And this language was being deciphered by James Prinsep. Brahmi and Kharosthi, these two languages were being discovered by James Prinsep, who was an officer in the Mint of East India Company. And Piyadasi means pleasant to behold. ऐसी कोई चीज जिसको अपने पास आप रखना चाहते हो, ऐसी चीज जिसको आप अपने पास रखना चाहते हो. So that is Piyadasi. And this term is being used for King Ashoka. Two terms have been used for King Ashoka. One is Piyadasi and second is Devanampiya, beloved of God. Right? Now, moving forward, another question which talks about this particular time period. And in the beginning of this particular time period, we talk about 6th century BCE. Now, 6th century BCE, my dear friends, is known as a turning point in early Indian history. It means that so many things happened in 6th century BC. Because of that reason, we call it as a turning point. What those things were happening? There were growing use of iron, development of coinage system, growth of Buddhism and Jainism, growth of 16 Mahajanpadas, and because of all those reasons, we call 6th century BCE as a turning point in early Indian history. Now, we took the concept of Mahajanpada here and now we are explaining this particular topic. Now, what are Mahajanpadas? Mahajanpadas, either they were being ruled by a single ruler or a group of people, right? It means they were kingdoms, they were empires, and the few examples are here like Vajji, Magda, Koshala, Kuru, and they were being ruled by kings, some by ganas, some were oligarchies. Now, what was the common thing about these Mahajanpadas? That there was a capital city. That capital city was fortified, and another important development that was happening from 6th century BC, my dear friends, that was that Brahmanas ने कोडिफाई करना शुरू कर दिया था चीजों को, है ना. उन्होंने सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स को बनाना शुरू कर दिया था, which were being composed as dharm shastras and dharm sutras. So that is one another important development that was taking place. Let's move forward. Now, we talked about Mahajanpadas, and in out of those Mahajanpadas, Magda was the most powerful Mahajanpadas. Now, we need to understand, हमें समझना होगा कि मगध ही क्यों? Why not Avanti? Why not Vajji? Why not other empires which you're talking about? Why only Magda we are saying? It means that there were certain things that were happening in Magda which made Magda the most powerful kingdom of its times. And what was those important things? Agriculture was productive. When agriculture was productive, तो खाने की प्रॉब्लम नहीं थी, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़िया हो रहा था. देन यहाँ पास में ही आयरन माइंस थी, तो आयरन यूज होता था टूल और वेपन बनाने के लिए. पास से ही आपको एलिफेंट्स मिल जाते थे जंगल से, एलिफेंट्स वर बीइंग यूज्ड इन आर्मी. देन गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज, वो नेविगेशन में हेल्प करती थी, कम्युनिकेशन में हेल्प करती थी, प्लस ambitious and ruthless kings like Bimbisara. And initially Rajgaha was the capital of Magda, but later on the capital was being changed to Patliputra, the present day Patna. So this is why Magda is being known as a very powerful kingdom. Now moving forward, Magda के ऊपर एक important dynasty ने rule किया, dear friends, that was the Mauryan Empire. And you must have heard about Chandragupta Maurya, you must have heard about King Ashoka. ये उसी Mauryan dynasty की हम बात कर रहे हैं. So अगर हमें मौर्यन डायनेस्टी के बारे में जानना है, if you want to know about Mauryan dynasty, so how come we
know about that particular dynasty? How do we come to know about that particular dynasty? So now from chapter 1 to chapter 2, there is a development. For chapter 1, still we are not able to decipher the written records, the script. But when we're talking about the time period from 6th century BC to 6th century CE, here we are able to decipher the scripts like Brahmi and Kharoshthi and other languages which were prevailing at that particular point of time. Notably Sanskrit also. हम सब संस्कृत जानते हैं, नाम पढ़ सकते हैं. So because of that reason, अब हम point to point पकड़ेंगे how we reconstruct the history of Mauryans and a number of sources. सबसे पहले तो archaeological finds तो है ही हैं, जो खुदाई में चीजें मिल रही हैं, एक्सकवेट के बाद जो चीजें मिलती है, चाहे उसमें स्कल्पचर्स हो, कुछ बिल्डिंग्स के पार्ट्स हो या कुछ और चीजें मिली हुई हो, रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, तो वो सब हमारे आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हो गए. इसके अलावा हमें अकाउंट्स ऑफ मेगास्थनीज, ही वाज ए ट्रैवलर हु केम टू इंडिया. देन वी हैव अर्थशास्त्र दैट वाज बीइंग रिटन बाय कौटिल्य. वन मोर थिंग, मेगास्थनीज रोट इंडिका. Then at the same time, Buddhist, Jaina and Puranic literature were also being written at that point of time. Inscriptions of Ashoka and rocks and pillars. All of these things help us in reconstructing the history of Mauryan Empire. Here a word has been mentioned as Dhamma. Dhamma means what? Righteous actions. Righteous actions. Righteous actions में क्या है? Respect for Brahmanas and elders. Treat slaves and servants kindly. Respect for all religions. That is Dhamma. This was the path propagated by King Ashoka later on, and he appointed certain ministers which were being known as Dhamma Mahamatyas to ensure that all these things are being followed. Now, when we talk about Mauryan Empire, and we have access to the information regarding Mauryan Empire, we have also come to know about the administration. What type of administration Mauryan used to have. Now, one important major development that Mauryans did, that there was one capital, no doubt about that, because the Mauryan Empire was very vast, बहुत फैला हुआ empire था. So there was one capital, but total उन्होंने 5 major political centers in all different directions बना रखे थे. We had the Patliputra as capital, Takshila, Ujjaini, Toshali, and Swarnagiri. So in all 4 cardinal directions, they had different formation centers. Now all these in centers के पास एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल बड़ा स्ट्रांग होता था, फोर्टिफाइड होते थे, ट्रेड रूट्स पर सिचुएटेड होते थे, कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ देखी कि आर्मी का स्विफ्ट मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था. तो आर्मी को स्विफ्ट बनाने के लिए, रैपिड बनाने के लिए, फास्ट बनाने के लिए मॉरियंस ने क्या किया, उन्होंने आर्मी को 6 सब कमिटी के अंदर डिवाइड कर दिया. नेवी, you can see here, नेवी, ट्रांसपोर्ट, foot soldiers, horses, chariots, elephants. और धम्मा महात्मास का ये बात हमने पहले पढ़ ली, that Dhamma Mahamatas were being appointed to spread the message of Dhamma. Right, wonderful. I hope you are able to understand what has been explained to you. Now let's move to the next slide. Or a picture is being there, which you can see. That is there in your book also. Now, whenever an empire comes, it also declines. Same way it happened with Mauryan Empire. Although there was great kings, but the Mauryan Empire lasted only for 150 years, and that is not a very long time period when we talk about dynastic rules. That was not a very long time period. But Mauryan Empire is still important. No, when India was under colonial rule, Mauryan Empire provided that strength that yes, we were very rich in all fields in ancient time. So that spirit was being encouraged when India was under colonial rule. So national leaders got inspiration. They were able to motivate and inspire people. Yes, हम बहुत पहले अच्छे थे और हम आगे भी अच्छे बन सकते हैं अपने आप में, हमें किसी colonial rule की जरूरत नहीं है. That message was being passed. Apart from that, we talk about King Ashoka. Even today we talk about King Ashoka as a source of inspiration. स्कल्पचर की फील्ड में, आर्ट की फील्ड में, रॉक एडिट्स की फील्ड में, स्तूपास के चक्कर में, इन सब कारणों से हम मॉडर्न एम्पायर को एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मानते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर. राइट, और आगे चलते हैं. मॉडर्न एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, नए किंगडम्स आने लगे, और उसके बाद जो मेजर किंगडम आए, दैट वाज द गुप्तास. नाउ व्हाट किंग्स यूज्ड टू डू, नाउ किंग्स यूज्ड टू हैव ए डिवाइन स्टेटस. Divine status
लेने का बेटा फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जब आपने डिवाइन स्टेटस ले लिया हो तो पीपल विल स्टॉप क्वेश्चनिंग यू। भगवान के ऊपर कौन क्वेश्चन करता है? सो what they did to show that they are next to God, they adopted high sounding titles like Devaputra, Devaputra, son of God. They built their colossal statues, बड़े बड़े अपने statues बनवाए। They consider themselves God like। प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ किंग, प्रशस्ति क्या होती है? अपनी अपने बारे में बहुत सारी प्रेज लिखवाना। प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति की हम बात करेंगे जो हरीश सिन्हा ने लिखी थी समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। कॉइन्स के ऊपर एक तरफ गॉड की इमेज, एक तरफ अपनी इमेज। ऑल दोस थिंग्स वर बीइंग डन सो दैट दिस कैन बी पुट इनटू द माइंड ऑफ पीपल दैट they are the kings are having divine status and we are nobody to question them। And as maybe I was talking about the history of Guptas, the way we are able to reconstruct the history of Mauryans, the same way with few new added things we are able to reconstruct the history of Guptas, literature, coins, inscriptions, prashastis, all those things were there. So with the help of these things, we are able to reconstruct the history of Guptas. Let's move forward. Now we know about kings, we know about their families, we know about dynastic succession. But how do we come to know about common people at that point of time? आम लोग कैसे रहते थे? तो बहुत सारी कहानियां लिखी गई, जातका की कहानियां थी, पंचतंत्र की कहानियां थी, और ऐसी कहानी का यहाँ पर जिक्र है घंटा तिंदु जातका। Now this घंटा तिंदु जातका is about, there is a story about a wicked king। wicked king का मतलब दुष्ट राजा, and people were suffering under his rule. So what he did, he disguised himself, उसने भेष बदला, and we tried to find out from the people what do they think about king, and what people replied that रात को तो रॉबर्स अटैक करते हैं और दिन में राजा के जो टैक्स कलेक्टर होते हैं वो हमें लूट के ले जाते हैं। So it means the king was not popular, it means the relation between common people and king were not cordial। और जब भी टैक्सेस की डिमांड हाई होती थी, what was the option left for the farmers? What option would have been left for the farmers? They used to escape into the forest। वो जंगल में चले जाते थे। Why? Because the land was available in plentiful। जंगल में बहुत जमीन होती थी, आप उसको साफ करो, खेती करो, टैक्स से आप बच सकते थे। So all these things were used to happen। When talking about agriculture, now all kings wanted to increase agriculture। They had a special emphasis on agriculture because why? Agriculture अच्छी होगी तो revenue will be good। So what they did, plow agriculture, used plow for agriculture, iron tip plow के ऊपर आगे आयरन लगा दिया ताकि सॉइल को डीप डिग किया जा सके। ट्रांसप्लांटेशन, then use of irrigation, wells, tanks, canals, etc. were being used। all those things were being done by kings, they were being sponsored by king। innovations were being done, why? So that the production can be increased and more revenue can be generated। now in Tamil Sangam literature we come to know about rural society also, rural society also। So there were different type of people which used to live in in South India। Some were known as Vellar, the rich peasants, Uzawar, the common people, and the Adimai, the slaves। So these were the small different what you call them, groups of people that were there। The word has been used as Gahapati। We can see a word Gahapati। गहापति, ओनर ऑफ द लैंड, चाहे छोटे लैंड के ओनर है चाहे बड़े लैंड के ओनर है, दे आर नोन एज द गहापतिस। सो सबसे जो स्लेव्स थे उनको कहा क्या कहा जाता था? दे वर बीइंग टर्म्ड एज आदिमाई। तो यू कैन गो थ्रू दीस नेम्स so that we can get to know about the rural society and how people were different, how the economically they were different। Moving on, another important thing, land grants। नाउ किंग अपने स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, आप सब सोच सकते हैं देयर वर एन नंबर ऑफ रीजन व्हाई किंग यूज्ड टू ग्रांट लैंड्स। but two main reasons that have been used here। one, that to expand agriculture, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए द लैंड वर बीइंग ग्रांटेड। एंड सेकंड रीजन व्हिच इज बीइंग स्टेटेड बाय डिफरेंट पीपल, दैट इज द वीकनिंग पॉलिटिकल पावर ऑफ द किंग। राजा की पावर वीक होती थी तो अपने फ्यूडल लॉर्ड्स को अपनी तरफ करने के लिए उनको लैंड ग्रांट्स दी जाती थी, ठीक है। तो लैंड ग्रांट के थ्रू भी हमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी नीड टू नो,
कि जो लैंड रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे, तो दिस इज अबाउट द लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स और इसके साथ में रेवेन्यू कलेक्शन। तो जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे वो सारे ग्रुप्स का रिकॉर्ड बना के रखते थे डियर फ्रेंड्स। लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो टैक्स कलेक्टर की रीच से बियॉन्ड होते थे, यानी जिनके जिनके पास जिनका डाटा टैक्स कलेक्टर के पास नहीं होता था। फॉर एग्जांपल पेस्टलिस्ट थे, जो अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हंटर गैदरर थे, फिशर फॉग थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे, बिकॉज दीज पीपल यूज्ड टू मूव वेरी स्विफ्टली। तो इन लोगों का डाटा जो टैक्स ऑफिशियल्स होते थे उनके पास नहीं होता। अभी हमने बात की रूरल पॉपुलेशन की, इसी तरीके से बहुत सारे सिटीज भी हैं। अब देखिए नंबर ऑफ सिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड आर ग्रेट इन नंबर, बट इट इज डिफिकल्ट टू कंडक्ट एक्सकवेशन। अगर मैं इंडस वैली साइट्स की बात करता हूँ, वो अधिकतर साइट्स अबंडेंट साइट्स है। अबंडेंट साइट्स का मतलब वहां पर कोई नहीं रहता आजकल, तो वहां पर एक्सकवेशन करना इज फार 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 इजियर। बट अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की साइट्स की बात करते हैं, they are difficult to excavate. Why they are difficult to excavate? Because people are still living there. If we talk about Varanasi, people are still living there. If we talk about Patliputra, people are still living there. So it is difficult to excavate these particular things. But we have got and number of artifacts which are related to these particular sites. For example, we have found pottery bowls, we have found dishes, we found north black polished ware used by rich people, ornaments, tool, weapons, inscriptions. All those things are being used by people of that particular point of time, and through excavation we are able to know about them. And through different records we are also come to know that different groups of people used to live in those cities. For example, there were washing folk, there were weavers, there were carpenters, there were teachers, merchants, kings. A word is being used here as guilds. What are guilds? Organization of people, those who used to do one work. एक तरह का काम करने वाले लोग अपना एक ग्रुप बना लेते थे, that is being termed as guilds. The Shrenis, right? All those things were happening. What was the job of the guild? Guild का काम होता था raw material को process करना, production को regulate करना, market में finished products को भेजना. All those things were the responsibility of the guild. They were very very important body when you talk about trade and commerce. Let's move forward. Trade was very very important, and we had trading relations, my dear friends. When to 6th century BC की मैं बात करता हूँ, तो we had trading relation with Central Asia, ईस्ट टू नॉर्थ अफ्रीका, बे बंगाल से साउथ ईस्ट चाइना तक हमारा ट्रेडिंग रिलेशन था। और कौन कौन से गुड्स को हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे? सॉल्ट, ग्रेन, क्लोथ, मेटल और स्टोन्स, टिम्बर, स्पाइसेस एक्सेट्रा। इट मींस वी हैड ए वेरी वेरी रिच ट्रेड। ट्रेड सरप्लस होता था, यानी दैट्स व्हाई इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, बिकॉज देयर वाज ट्रेड सरप्लस। वी वर हैविंग ह्यूज प्रॉफिट्स इन ट्रेड। Now, this was the time in Indus Valley civilization we did not talk about a lot about coins, but in this particular point of time, coins were being used. Coins were being used. Now, initially there were punchmark coins of silver and copper, minted. किंग्स इशू करते थे कॉइन्स को, मर्चेंट्स इशू करते थे, बैंकर्स इशू करते थे, टाउन यानी अलग अलग लोग कॉइन्स को इशू करते थे। बिकॉज कॉइन्स की बजाय जिस मेटल का कॉइन होता था उसकी वैल्यू होती थी या तो सिल्वर या गोल्ड। पहले गोल्ड कॉइन इशू किए कुशानाज ने, ठीक है। रोमन कॉइन्स भी मिले हैं, ट्राइबल चीफ्स भी कॉइन्स को इशू करते थे, इंडो शका इंडो ग्रीक किंग्स के कॉइन्स भी यूज हुए हैं। इसके अलावा जो एक्सीलेंट गोल्ड कॉइन्स थे वो सबसे इशू किए थे गुप्ता रूलर्स ने। एक्सीलेंट फिनिशिंग गोल्ड कॉइन्स की अगर बात करें तो देवर बीइंग इशूड बाय द गुप्ता किंग्स। 6th सेंचुरी सी के आसपास, मैं बीसी से आ गया 6th सेंचुरी सी पर, कॉमन एरा। यहाँ पर गोल्ड, नए गोल्ड कॉइन्स की फाइंड जो थी टेपर ऑफ, मतलब कम होने लगे, नए गोल्ड कॉइन्स नहीं मिलते थे। इसका रीजन थे, इसके बहुत सारे रीजन, प्रोबेबल रीजंस थे। वेस्टर्न रोमन एम्पायर के साथ जो ट्रेड था वो डिक्लाइन हो गया। जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो ट्रेड भी डिक्लाइन हो गया, तो नए कॉइन्स बनने बंद हो गए, नए टाउन्स आए, ट्रेड एमर्ज होने लगा। और ये भी हो सकता है कि कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन, कि सिक्कों को अब ज्यादा यूज किया जाने लगा, उसको होर्डिंग नहीं होती थी, coins were being used. That's why the finds of new gold coins taper off
when we talk about 6th century CE. Let's take last few questions. Inscriptions are a very, very important resource if you want to know about the history of this particular time period. Now, when you talk about inscriptions, so बहुत सारे इंस्क्रिप्शन इशू किए गए, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिल भी गए और बट उसके साथ सर्टेन लिमिटेशंस होती है. जो पुराने इंस्क्रिप्शंस हमें मिले उसकी लिमिटेशंस भी. लिमिटेशंस क्या है? लेटर्स आर फेंटली एनग्रेव्ड, दिख नहीं रहे लेटर्स, कुछ डैमेज हो गए हैं, रियल मीनिंग पता नहीं पता चल पा रहा है. बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले हैं, जो मिले भी हैं वो सारे डेसिफर नहीं हुए हैं. ठीक है. इसके अलावा जो कॉमन पीपल है उनके बारे में पता नहीं चलता है. ठीक है. ये खाली रिच पीपल या जो किंग्स होते हैं जिन्होंने इसको कमीशन किया उसके बारे में पता चलता है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट इंस्क्रिप्शन हमें बहुत कुछ बताते हैं. लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए, एक्सपेंशन ऑफ स्टेट, राज्य कितना बड़ा हुआ, बाउंड्रीज बाय द किंग, वी नो किंग्स बाय नेम, द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, वी टॉक अबाउट डिफरेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनके बारे में पता चलता है. इट tells us about the land system, it talks about the trade, it talks about the historical events, it talks about language, religion, and each and everything. And that's what is being very rightly said by DC Sarkar. There is no aspect of life, culture, and activities of the Indians that is not reflected in scripture. So all these questions को मैंने लिया है आपकी बुक में से निकाला है, उसको मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म देने की कोशिश की है. आप इसको पढ़िए, आपको काफी इजी रहेगा इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए. इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये साथ में मैंने एक मैप अटैच किया हुआ है. इस मैप को आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. फ्रॉम माय साइड चैप्टर 2 इज ओवर. We'll be coming back with the revision class very soon and with chapter 3 also. Till that time, enjoy reading, have great fun. Namaskar.